मेरा नाम डॉक्टर वकार अहमद है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में, और इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को एक पीएचडी के पब्लिक डिफेंस और वाया के लिए, जो शाहजेब साहब का है। इस इवेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान मजीद से, और उसके लिए मैं दावत देता हूँ डॉक्टर आसिम महमूद खान साहब को। प्लीज़ तशरीफ़ लाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। वाइवा बुक और पब्लिक डिफेंस है शाहजेब साहब का। शाहजेब साहब के थीसिस का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी ऑन एकेडमिक इंगेजमेंट, कॉग्निटिव इंगेजमेंट एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। इनके एक्सटर्नल हैं डॉक्टर परवेज़ अहमद साहब, प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ अहमद साहब, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। शाहजेब साहब ने इस पब्लिक डिफेंस से पहले अपने 2 आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, जिनमें से एक है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिव्यू में इट्स इम्पैक्ट फैक्टर इज 3.3 एंड दूसरा है लिब्री में इट्स इम्पैक्ट फैक्टर इज अराउंड 1। शाहजेब साहब प्लीज तशरीफ लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहज़ेब, ताल्लुक़ मेरा सिंध से है, और मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में एज ए पीएचडी कैंडिडेट हूँ। और आज मेरा जो है वो थीसिस का डिफेंस है, जिसका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी ऑन एकेडमिक इंगेजमेंट, कॉग्निटिव इंगेजमेंट एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस स्टूडेंट्स। I have conducted this study under the supervision of Sir Professor Dr. Mohammad Asif Naveed and Dr. Ghulam Murtaza Rafiq Saab. So the operational definitions of the terms in my dissertation that I have followed are presented as: information literacy refers to organizing when information is needed and then initiating search strategies to locate the required information. It includes evaluating, synthesizing, and using information appropriately, ethically, and legally once accessed from any media, including electronic or print. This definition is adopted from Kurbanglu et al. 2006. Similarly, the academic performance refers to observable behaviors related directly to the learning processes. They are the behaviors that are essential to achieve the minimal threshold level of learning. Zoc et al. 2019. And then the cognitive engagement refers to involves the expenditure of thoughtful energy to comprehend complex ideas to go beyond the minimal requirements.
The focus is on the psychological investment in learning, understanding, and mastering the knowledge. Zoc et al. 2019. Similarly, the academic performance is defined as the extent to which a student, teacher, or institution have achieved their educational goals. Multiple citations are provided there. It is the outcome of education. Bluma, Mani et al. 2019. The key related literature that I have explored from multiple databases with different key terms such as information literacy, academic engagement, cognitive engagement, and academic performance. Similarly, the literature was searched with other terms for the correlation and interrelationship between the variables. Studies investigating IL among students. Sir, I have changed the slide. There the slide is changed. I don't know why on projector it is previous one. आपके सामने चेंज हो गई। Yes. इंटर प्रेस करें। No. वहाँ पे चेंज है, प्रोजेक्टर पे चेंज नहीं। आप चेंज कीजिएगा स्लाइड। कीपैड लॉक तो नहीं है, कीपैड लॉक तो नहीं है। परवेज सर से पूछे नेक्स्ट स्लाइड आ गई। सर डॉक्टर प्रवेश साहब आपके पास दूसरी स्लाइड शो हो रही है? जी नहीं, ये तो अभी तक पहले ही है। अच्छा सर। इसको डुप्लीकेट करना स्लाइडों में नंबर डाल दिया करें, नंबर रख दिया करें स्लाइड। अच्छा जी सर। डुप्लीकेट पेज नंबर Literature that I have conducted on my concerned variables is on information literacy, academic engagement, cognitive engagement, and academic performance. The literature I have searched from multiple databases with the different keys such as information literacy among the students of Pakistan. Similarly, the literature is also searched with the interrelationship between information literacy, academic engagement, cognitive engagement, and academic performance. The concise form of my literature that I have provided in slides is as studies investigating IL among students in Pakistan perspectives vary in findings, such as Naveed depicted adequate level of IL among medical students, Hassan 2020 and Asif and Naveed 2025 found poor IL among medical students. Mahmood et al. 2023 revealed inadequate IL among the students of University of Sargodha. Similarly, the research revealed low to moderate level of IL among the students of management sciences in Pakistan. Multiple citations are provided there to justify. Similarly, the literature related to interconnection between reveals that studies theorized connection between IL and academic engagement. Co and Gonia 2003, and similarly some multiple citations are provided to justify the relationship between information literacy and academic engagement. Similarly, however, studies lacks examining the empirical interconnection between IL and academic engagement. The past studies conceptualized the interconnection between IL and cognitive engagement. Similarly, multiple citations are provided. A theoretical connection between IL and cognitive engagement has been established by prior studies, hence lacking empirical evidence for the relationship between IL and cognitive engagement.
For the third variable, studies empirically established the connection between IL and academic performance. Bennett and Kumar. Some other citations are also provided, including my own study, Mugari et al. 2023. The available studies in the literature vary in terms of findings, methodology, and population, excluding business students. Specifically in Pakistan, it means the gap exists. The population gap, empirical gap, and knowledge gap exist. Similarly, the statement of the problem that I have developed as a prelude of related research indicated the recognition of IL as meta literacy, which is essential for success in an ever-changing, the contemporary information landscape. Previous studies have theorized the connection between IL academic engagement and academic cognitive engagement. Similarly, a limited research in Pakistani context in past has described the relationship between IL and academic performance among students of administrative and management sciences. However, a lack of empirical studies could be observed that examine the relationship among or determine the impact of IL on these variables among business students in Pakistan. Therefore, it is needed to study the perception of students about IL in order to improve their quality academic engagement, cognitive engagement, and academic performance to enable them to practice as information literate to meet the academic standards and perform with excellence within academics and in business context. Considering the statement of the problem and concerned literature review, the following research objectives are developed to determine the perceived level of IL skills of currently enrolled business students in Pakistan, to determine their self-perceived level of academic engagement, to measure their self-perceived levels of cognitive engagement, to identify self-perceived level of academic performance, to investigate the effect of IL on academic engagement, cognitive engagement, and academic performance among business students in Pakistan. The research methodology and design that I have followed include research approach. I have used qualitative, quantitative research approach. The sample size that I have determined is 650. Similarly, the research method, survey method I have used, measurement method, questionnaire survey adopted with permissions from the developers of instruments. Population consists of currently enrolled business students in top 13 HEC Times ranked business institutions in Pakistan. Measurement instrument is split into two sections. One consists of demographic background of the research participants and three sections related to information literacy, academic engagement, cognitive engagement, and academic performance. Sampling technique applied to approach the research participants was stratified convenience sampling. Response rate was 554. 81.67% responses I have retrieved that were analyzed. Constructs and measures include information literacy self-efficacy scale from the study of Kurbanglu et al. 26 was adopted. That instrument consists of 28 items and 7 dimensions. The reliability of the instrument to determine through confirmatory factor analysis. However, I have provided alpha values to summarize the results. It is also considered as a reliable method of determining the validity of an instrument. That was 0.850. Academic engagement, 4 statements related to academic engagement were adopted from Zog et al. 2019. The determined alpha value for the 4 statements was 0.699. Similarly, the 4 statements related to cognitive engagement were also adopted from Zog 2019. The examined alpha value for 4 statements was 0.750. Similarly, 10 items related to academic performance were adopted from Bhumawani et al. 2019. The alpha value for these 10 items was determined as 0.697.
Key findings of this research include the relationship between my objectives and the findings related to my first objective include perceived level of information literacy. The observed mean that I analyzed from empirical data was 3.37. Standard deviation consists of 0.472. We conclude that these business students perceive themselves as information literate as they had reasonable self-perceived information literacy. Similarly, the objective number 2 achieved as perceived academic engagement with 4 statements. The observed mean for these statements was 3.57 and standard deviation was 0.822. High perceived academic engagement. Similarly, research objective number 3 was made as a perceived cognitive engagement as a 3.708. The standard deviation encompasses on 0.782. Adequate perceived cognitive engagement among business students. Similarly, the perceived academic performance was analyzed as the observed mean was 3.82 and the standard deviation was 0.627. High perceived academic performance. These were the 4 primary objectives of my study that I have achieved in this way. Similarly, the main primary hypothesis of this study was to determine the interrelationship between academic engagement, cognitive engagement, and academic performance. Therefore, reviewing the existing literature, I developed null hypotheses such as H01, IL, and academic engagement. The standard deviation that to determine the relationship between these variables, first I have developed a research proposed model, operationalized research model that was examined through variance-based approach in smart PLS. The results of system generated beta for effect of information literacy on academic engagement was as 0.531. Similarly, the sample mean consists of 0.539. Similarly, the standard deviation with lambda is 0.048. The total value of this hypothesis was 11.115. Similarly, the F square that indicates the impact or explanatory impact of predicting variable on response variable as 0.200. And similarly, the R square observed was 0.166. It means information literacy lies 16.6% impact on academic engagement. Similarly, the hypothesis number 2 was achieved as information literacy has no significant effect on cognitive engagement. The observed beta for this hypothesis was 0.594. The sample mean consists of 0.67 and the standard deviation was 0.045. The total value was 12.694. Similarly, F square was 3.59. The R square observed was 0.227. It means information literacy lies 22.7% effect on cognitive engagement of business students in Pakistan. Similarly, the third research objective was to determine the effect of information literacy on academic performance. The observed beta for this hypothesis was 0.665. Similarly, the sample mean was 0.598. In this way, 0.048 the standard deviation was observed. The total value for this was 14.663. Similarly, F square 0.293 and R square that was observed as 0.264. It means information literacy lies 26.4% effect on academic performance. Note the significance level was significant at the level of 0.005 with 210 minus plus 100. The operationalized research.
सिग्निफिकेंस लेवल तो दिया ही नहीं आपने यहाँ और बताया भी नहीं हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। Sir, these all hypotheses were accepted as information literacy lies positive effect and वो आगे आप देखते तो सही ना ये सिग्निफिकेंस लेवल भी या sorry sir, it is my दो mistake. कॉलम तो और बनाते ना Yes sir. ये एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ ये भी एक कॉलम होना चाहिए था और पी वैल्यू का जो कॉलम जो बताती है सिग्निफिकेंस है कि नहीं वो भी आपने इसमें दिया है ये कॉलम। Sir, at the bottom of the slide, I have tried to provide the significant level at 0.0. However, I have forgotten and लिखा है ना yes sir, it is my mistake. सिग्निफिकेंस लेवल दिया ही नहीं है और ये भी नहीं बताया एक्सेप्ट हुआ रिजेक्ट हुआ जो Yes, आपने sir. से दो वो छोड़ दी। Sir, all these hypotheses are accepted. However, I have forgotten or it is a mistake on my part. Yes sir, all these जी सर thesis में लिखा हुआ है. मैं ये पूछ रहा था ये तीनों हाइपोथेसिस जो है ये एक्सेप्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। जी सर, तीनों हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुए हैं और जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने एक्सेप्ट किए हैं कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी का इफेक्ट है एकेडमिक एंगेजमेंट पर भी, कॉग्निटिव एंगेजमेंट पर भी और एकेडमिक परफॉर्मेंस पर तीनों भी. जो है ये नॉन हाइपोथेसिस थे। जी सर, ये तीनों नल हाइपोथेसिस थी. अच्छा जी सर. इफेक्ट है लेकिन इफेक्ट साइज जो है वो बड़ा थोड़ा है। आ, यही है ना जी सर. 60% है 22% है 26% है। जी सर बिल्कुल. सही है ना। जी सर बिल्कुल. हाँ इफेक्ट तो है लेकिन वो इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं है वीक इफेक्ट है। जी सर, पुअर टू मॉडरेट है. हाँ तो 3 से नीचे जो है होता है ना वो पुअर ही होता है। 3 से ऊपर हो तो फिर या 5 से ऊपर मॉडरेट कहते हैं। हमारा चले जैसे आपने इंटरप्रेट किया। जी सर. सिग्निफिकेंस है ना ठीक है ना। जी सर. चलिए आगे चलें। जी सर. Sir, the operationalized research model is in front of you. The statements, as I mentioned earlier, that information literacy at the left side consists of 28 statements and 7 dimensions. However, the statements that had poor factor loadings were excluded from the model, as these statements lies their negative effect on these response variables. Therefore, research suggests that if outliers exist and items loadings are not significant, then Hires 2019 and Hires 2022 suggest that some statements could also be excluded from the proposed research model. Similarly, sir, I have concluded my research as business students has a reasonable perceived information literacy, as they reported their ability to define the need for information, initiate search strategy, locate and access the resources, access and comprehend information, interpret, synthesize and use information, communicate information and evaluate the product and process of information. Similarly, these students reported as high perceived academic engagement, as they opened that they study regularly on weekends, spend lots of time to study by their own, rarely skip classes and usually come to class having completed their readings and assignments. Likewise, the students of business studies opened a high perceived cognitive engagement and reported that they enjoyed the intellectual challenges of courses, usually motivated to study, get a lot of satisfaction from studying and find their courses intellectually stimulating. The research participants also exhibited agreement with most of the statements related to academic performance, as they enjoy uncertain situations in college where they can find out how capable they are, always desire to perform better in class than others, regularly study for feedback on their performance from the faculty members, willing to work hard to succeed their exams, perceive their faculty as supportive for
their academic betterment actively and enthusiastically participate in most of the classroom activities. They always put necessary efforts to reach their desired goals. They always want to be regarded as best students in their class. Business students perceived IL had a positive and significant effect on their perceived academic engagement, cognitive engagement, and academic performance. As I earlier mentioned that information literacy lies positive effect on the response variables, academic engagement, cognitive engagement, and academic performance. Based on these findings, some recommendations that I have provided in this thesis as business educators should consider the integration of IA. They should adopt active IL teaching strategies that engage and encourage students in learning of IL. Business educators should support personalized IL teaching mechanisms such as tailored workshop, seminar, webinars, and peer tutoring within and beyond office hours. They should assign and assess students IL related tasks. Some recommendations for business librarians include business librarians should collaborate with the business faculty. They should create subject-specific resource guide and toolkits to assist the learning of IL among business students. So they should the business institutions, administrators, and policymakers should consider embedding IL and allocate adequate resources that support the teaching and learning of IL among business students in Pakistani business institutions. Likewise, business accreditation bodies has also role. They can also perform the role in the learning and development of IL related activities in Pakistan. Such accreditation bodies include Trade and Commerce and Business Education Accrediting Council, such as the National Business Education Accreditation Council, the Higher Education Commission of Pakistan, and other potential stakeholders need to revise business accreditation criteria with business educational institutions. Research implications consist of the findings from the empirical analysis provided important insights to the administration of business education institutions, business librarians, information professionals, academic administrators, policymakers, enterprises of all types, such as small and medium enterprises, business accreditation bodies, Trade and Commerce, the National Business Education Accreditation Council, the Higher Education Commission of Pakistan, and other potential stakeholders in Pakistan and abroad in South Asian countries, such as should consider the importance and value of IL in policy and practice for students, as it is attributed as positive and significant measure in business, in students' academic engagement, cognitive engagement, and academic performance. There I have widened the scope of the study, providing the implications of this study in South Asian countries, as the South Asian countries including Pakistan, Iran, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, these the people residing over there they also share similar languages and customs. Therefore, the findings of this study can also be generalized to following countries. The suggestions for future research include some limitations were also the part of this study, and the research suggests that good research also highlight their limitations and turn these limitations into opportunity and provide the path to future research studies to strengthen further the topic. Some suggestions include future research inquiries may replicate the study on research participants of different disciplines, मिसाल के तौर पर law students, engineering students, and on the students of other general and pure sciences disciplines. The proposed research model opened up a new path for future researchers.
जो यहाँ पर मैंने रिसर्च मॉडल प्रपोज किया था लिटरेचर बेस पर, उसमें एक जो हमारा प्रेडिक्टिंग वेरिएबल था और 3 जो है रिस्पांस वेरिएबल थे, इसको फर्दर आने वाली स्टडीज जो है वो एक्सटेंड कर सकती हैं मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग वेरिएबल्स के साथ। तो इसी तरह से दे मे एक्सपेंड the research model to other variables in business sciences such as entrepreneurial behavior, entrepreneurial passion, entrepreneurial alternatives, business communication, organizational behavior and psychobehavioral aspects of business education. Likewise, other dimensions of student engagement include behavioral engagement, agentic engagement, dedication, motivation, social engagement, emotional engagement and others. The upcoming research may also extend the model to the workplace and daily life context, such as health, information literacy, creativity, work performance, communication, and other necessary variables related to certain phenomena. The future research should investigate factors that influence information literacy among students, as I found that the participants of this research had perceived adequate information literacy. Therefore, research in past suggests, such as the theory of Dunning-Kruger, that suggests that if participants perceive themselves as high perception for certain phenomena, it could be overestimation or underestimation. Therefore, this future research direction is provided that these areas was still unexplored, that how these students had learned high perceived information literacy, as the research in past that I have conducted revealed that in Pakistan there is low or no provision for the impartition of information literacy among business students in Pakistan. The current research used a quantitative method of assessment. Future research studies should apply quantitative or mixed methods to validate the current research findings in light of new facts. यकीनन जब दूसरी स्टडीज होंगी तो वो अपने तौर पर उनके पास जो उस वक्त में उनके पास फैक्ट्स होंगे उसके मुताबिक इस स्टडीज की फाइंडिंग्स को स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। दिस स्टडी एड्रेस्ड बिजनेस स्टूडेंट्स परसीव्ड information literacy, academic engagement, cognitive engagement and academic performance and the interrelationship between these variables. However, future research studies should split these students into groups such as undergraduate students, graduate students, postgraduate students, to compare the difference in their perceived information literacy, academic engagement, cognitive engagement and academic performance and the interrelationship between variables and also the mediation of one variable to another. इसमें क्योंकि मैंने डायरेक्ट रिलेशन चेक किया हुआ है और मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग रिलेशनशिप चेक नहीं किया हुआ, तो ये भी मेरी स्टडी की लिमिटेशन है, जो मैंने हाइपोथेसिस जो मैंने थीसिस में तो प्रोवाइड की हुई है। तो इस वजह से मैंने कहा हुआ है कि जो मेरी फ्यूचर स्टडीज आने वाली हैं उनको इन जो गैप्स हैं मेरी थीसिस के लिमिटेशन से उनको कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू। This was all related to my PhD thesis. बहुत शुक्रिया वकार साहब और बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताएं कि आपका थीसिस भी मैंने इवैल्यूएट किया था। जी सर। तो उसमें जो मैंने कुछ चीजें जो ऑब्जर्वेशन दी थी मैंने अपनी रिपोर्ट में, जी सर, उनके साथ क्या किया आपने? सर उनको जो आपने जितने भी आपकी क्यूरीज थी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मैंने उनको एड्रेस किया है कि रिप्लाई टू रिव्यूअर्स कमेंट्स, तो उसमें जितने भी आपके कमेंट्स थे एपीए के रिलेटेड थे और जो चीज़ें आपने कही थी वो सारी की सारी थीसिस में मैंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है और उनको इंडोर्स करके ही मेरे सुपरवाइजरान ने ये डिफेंस कंडक्ट करवाया है। और उसमें आपके जो भी सर उसमें क्यूरीज वगैरह थी, जो सजेशंस थी, वो सारी की सारी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनकॉर्पोरेट कर दी है। सारी की है? जी सर। थोड़ी तो लिखी? नहीं सर। अच्छा जी सर। चलो ये तो कंफर्म हो गया ना। जी सर।
अच्छा ये बताएं कि आपने एपीएस चैनल यूज किया है ना? जी सर, APS 7th। हाँ, और कौन सा उसका एडिशन? सर 7th एडिशन। ठीक है, वही लेटेस्ट है ना? जी सर। सुना आपको अभी आने वाला ही आ गया, चले वो इतना फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत एडिशन निकालना है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो करेंगे ना। जी सर। अच्छा, आपने पहली स्लाइड में ही मैंने देखा था, जी सर। जो फर्स्ट स्लाइड आपने दिखाई है वहाँ पर जो एटॉल है जी सर। 6 दफा इस्तेमाल हुआ। पहली स्लाइड में 6 दफा एटॉल का लफ्ज है यहाँ पर, है ना? फर्स्ट स्लाइड में, जी सर। है ना? जी तो सर। एटॉल का रूल बता दें, एपीए क्या कहता है? सर APA जो 7th है वो यही कह रहा है कि 2 से अगर ज्यादा ऑथर्स हों तो उनको एट ऑल किया जाए, लेकिन इससे जो प्रीवियस वर्जन था वो ये कह रहा था कि अगर 3 से ज्यादा हों तो फिर एट ऑल किया जाए। तो यहाँ पर 2 से ज्यादा थे ऑथर्स, तो इसी वजह से सर इनको एट ऑल किया हुआ है। देखिए पहली दफा एटॉल कर रहे हैं, या पहली दफा पूरा लिखे और दोबारा जब साइटेशन रिपीट हो तो फिर आप एटॉल करें। पहली दफा सर पहली दफा ही। इतना तो नहीं है यार, पहली दफा तो नहीं है ना, दो तो नाम है तेरा। मगर ये कि ये वैसे मैंने देखा है कि ये बड़ा ये रिवाज ही बन गया है कि बस एटॉल लगाते जाओ, एक ही लिखो, पहला सब लिखो और एटॉल कर दो। वैसे उनको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, जो भी है ये शॉर्टकट है किस्म का ना, एटॉल का यूज जो है क्या यूज समझने के बेस यूज है। अच्छा ये आखिरी देखें जरा, आखिरी साइटेशन भूमा मानी, ये कितने नाम है? एक नाम है, दो नाम है? सर ये एक ही नाम है। इनके जो मेरे पास रिसर्च आर्टिकल मौजूद था उसके दरमियान सिर्फ स्पेस ही था, कोई हाइफन कोई कॉमा नहीं था। इसी वजह से सर जो गूगल स्कॉलर पर भी है वो भी वैसे ही है, और इसी तरह से मैंने इसको, क्योंकि ये मेरा मेजर साइटेशन थी और ये मेरा इंस्ट्रूमेंट था, तो इसको मैंने जो मेरे पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल हैं उनमें भी इसी तरह से ही है, और जो ऑथर ने खुद से प्रोवाइड किया हुआ है सर उसको भी इसी तरह से ही है। तो इसी वजह से इसके दरमियान में स्पेस है और कॉमा वगैरह नहीं थे। जी सर। जी सर, जी सर, जी सर। भूमा मानी ये नाम लग रहा है। जी सर, इंडियन ही है। इंडियन या नेपाली या श्रीलंकन में भी। जी सर। अच्छा अच्छा, ये बताएं ये जो आपने ज़ाहिर है इसका बैकग्राउंड भी देखा होगा, इंफॉर्मेशन लिटरेसी का कॉन्सेप्ट कितना पुराना है बड़ा? सर ये कॉन्सेप्ट जो है वो 1974 में जो पॉल ज़र्सबर्ग हैं उन्होंने प्रेजेंट किया था, और उसको डिनोट करने के लिए कि इंफॉर्मेशन लिटरेट जो बंदे हों, जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको टैकल करने के लिए जो है ये टर्म जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा जी सर। अच्छा, आपने ये जितनी भी डेफिनेशन या जो ये कॉन्सेप्ट बयान किए हैं ना, इसका जो हमारे जो लिटरेचर में जो मोस्ट कंटेंट जो काम है ना, जी सर। वो जो लोग साइट करते हैं और डिफाइन भी करते हैं, जी सर। वो तो है एएनए का और एसीआरएल का। जी सर, डेफिनेटली। उसकी आपने जिक्र नहीं किया है यहाँ पर। सर यहाँ पर क्योंकि मैंने जो इंस्ट्रूमेंट्स अडॉप्ट किए थे उस हवाले से मैंने ये रखी हुई है, वरना मेरी थीसिस में जो मेजर डेफिनेशन प्रोवाइडेड है वो क्लिप की है, और इसी तरह से फिर एएनए की है, एसीआरएल। थीसिस में आपने थीसिस में दी है, लेकिन यहाँ पर आपने जी सर। उसको नहीं लिखा। जी सर। अच्छा अच्छा, जी सर। सिलप नहीं, वो सिलप है, सिलप, ठीक है ना जी? जी सर। यूके की जो एसोसिएशन। जी जी सर। पर ये हमने एएनए के लिए और एसीआरएल ने जो है ना इस पर खासा किताबें भी लिखी हुई हैं, जी सर। की बुक्स हैं। जी सर। तो हमारे प्रोफेशन में जो पायनियर्स है ना, वो इस काम के हवाले से वो एएनए ही है। जी सर, डेफिनेटली दीज ऑर्गेनाइजेशन जबरदस्त एक सोर्स है, ऑनलाइन एक सोर्स है जहाँ से सारी डेफिनेशन मिल जाती है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है वो कौन सी है बना? सर सोर्स इनकी अपनी एएनए की वेबसाइट है, तो वहाँ से एक और भी है, वो ओडीएलआईएस का नाम सुना है? अनलिमिटेड वालों की। जी सर, उसका नाम सुना है। वो ऑनलाइन डिक्शनरी फॉर लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, वो जबरदस्त है, वो 2000 से ज्यादा पेजेस बनते हैं उसके, अगर आप सेव करें तो उसको डाउनलोड करें। ठीक हो गया सर, अच्छा। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें भी इंफॉर्मेशन लिटरेसी की डेफिनेशन शायद एएनए के हवाले से। जी जी।
वो भी याद नहीं मैंने, पर वो हम वो यूज करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी करते हैं वहीं से डेफिनेशन ले। जी सर। और वो डेटा को अपडेट भी करते हैं। जी जी सर। अच्छा, कितनी डायमेंशन हैं एएलए के मुताबिक इंफॉर्मेशन लिटरेसी की? सर एएलआई के मुताबिक जो मैंने सर इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट किया हुआ है उसमें तो 7 डायमेंशंस हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट की जो फाउंडेशन है वो एएलए से भी है, रब्रिक से भी है, और इसी तरह से मल्टीपल इंफॉर्मेशन लिटरेसी के मॉडल्स हैं। ठीक है, सही है, तो अच्छा, हमारा ये साइटेशंस की एरर है ना, ये काफी मुझे नजर आ रही है, इसमें तो नजर आ रही है, आप थीसिस हो सकता है आपने ठीक कर ली सर थीसिस में मैंने करेक्ट कर दी है। जी सर। ठीक यहाँ नजर आ रही है। जी सर, मैं फिर री-वेरीफाई इंशाल्लाह करूंगा, और जिस तरह से एपीए कहता है कि मैंने पहले भी वेरीफाई की है, और फर्दर मैं इसको जो है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। जी सर। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपने एक 1984 का भी एक आगे दिया हुआ है, स्टडी का हवाला दिया हुआ है, थोड़ा आगे चलिए। सर लिटरेचर रिव्यू में हाँ, इधर ही एक 1984 का भी मुझे मिला था, नजर आया। जी सर 83 का है, मिंदेंज। हाँ 83 का। जी सर। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरप्रेशन। जी सर। अच्छा, चलिए अब वो आपने बता दिया कि ये कॉन्सेप्ट 1974 से शुरू हुआ था, तो फिर तो जस्टिफाइड है 1983 की स्टडी। जी सर। ठीक है ना? जी सर। वरना आपने जो लिटरेचर अपना पढ़ा है ना, उसमें तो ये 2005-6 से ही ये काम चला है। अच्छा सर, इसमें इसमें अगर इजाज़त दें तो मैं कुछ ऐड करूं सर। इसमें सर ये जो ओल्ड स्टडीज़ हैं, मैं समझ रहा हूँ कि ये आउटडेटेड तो भले ही हैं, लेकिन क्योंकि कॉग्निटिव एंगेजमेंट और इंफॉर्मेशन लिटरेसी के दरमियान एम्पेरिकल रिलेशनशिप टेस्ट नहीं हुआ था, इसी वजह से उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें फाउंडेशंस प्रोवाइड करने के लिए कुछ ओल्ड स्टडीज़ का भी सहारा लेना पड़ा है। लेकिन थीसिस में जी सर। मेरा सवाल था, वो आपने वो पहले जवाब दे दिया उसका, आपने बड़े ओल्ड साइटेशन यूज की है, उसकी क्या वजह है, वो आपने उसका जवाब दे दिया। ठीक है जी सर। कि आपको फिजिकल वो नहीं मिली, तो इस वजह से लेटेस्ट में नहीं मिली, तो पुरानी मिल गई, तो इसलिए आपने जी सर। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपने 14 यूनिवर्सिटियां आपने जिक्र किया था सर, 13 यूनिवर्सिटीज। 13 यूनिवर्सिटी में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी सर स्टूडेंट्स की? सर असल में मैंने उनकी वेबसाइट्स को जितना भी एक्सप्लोर किया और रिसोर्सेज जितने थे मेरे पास वो लिमिटेड थे या एडक्वाट थे, मैंने जितनी भी कोशिश की उस हवाले से मुझे कोई अथेंटिक जो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स थी वो तो नहीं मिल सकी, लेकिन एक एस्टिमेटेड जो है 13 यूनिवर्सिटीज़ में जो बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट थे उनको अप्रोक्सीमेटली 20,000 ही कंसीडर किया गया है मेरे थीसिस में। अच्छा, ठीक है, वो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% एग्जैक्ट होनी चाहिए, वो इसी तरह की अप्रोक्सीमेट फिगर मिलती है ना। जी सर। हाँ ठीक है, तो 20,000 में से सैंपल साइज आपने ये 6 कितना निकला, 654 क्या था? जी सर। किस फार्मूले के तहत? सर असल में जो फार्मूला था वो तारू यमानी का फार्मूला था 1962 का, लेकिन उसमें सर ये था कि क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा पहले भी रिसर्च की तो उसमें मवाजना ये था कि इसी टॉपिक से रिलेटेड जो इसराइल के बच्चे थे वो प्राइमरी के बच्चे भी इस कैलिबर के थे कि उनका जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मयार था वो हमारे मुताबिक बहुत अच्छा था, लेकिन जितनी मैंने पाकिस्तान में स्टडी की इंफॉर्मेशन लिटरेसी के हवाले से तो यहाँ पर डेटा कोई खातिर ख्वाह, कोई सेटिस्फैक्ट्री, कोई उसमें आउटलायर्स वगैरह और इस तरह के मिसिंग रिस्पॉन्सेज का मसला बड़ा था। तो इसी वजह से सर रिसर्च क्रिसवेल की हो, हायर्स की हो 2019 की, 2022 की, हैंसलर की रिसर्च हो, इसी तरह से फिर दूसरी रिसर्च कहती हैं कि मेरा ये सवाल नहीं है। जी सर। मैंने सवाल ये पूछा है कि अराउंड 20,000 पॉपुलेशन में से आपका सैंपल साइज जो है वो 654 आपने बताया है। जी सर। ये किस तरह कैलकुलेट किया, किस फार्मूले से निकला है? सर मैं यही अर्ज करा। जी जी,
इसमें सर मैं यही अर्ज कर रहा था कि जो हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट जो सैंपल साइज बना था वो 392 बन रहा था, लेकिन क्योंकि मेरे पास 377 बन रहा है। जी सर, तो क्योंकि सर मेरा रिसर्च का एक्सपीरियंस माजी का कुछ इस तरह से रहा है और रिसर्च भी सजेस्ट कर रही है, और खास करके जब आप स्मार्ट पीएलएस और वेरिएंस बेस्ड अप्रोच कर रहे हैं तो उसमें वो रिसर्च कह रही है कि जितने भी आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स हों उसकी 5 से 15% तक जो है आपके रिस्पॉन्सेज ज़्यादा होना चाहिए। तो जो मेरी स्टेटमेंट्स बन सकती थी उनको जब हमने कैलकुलेट किया और उस बुनियाद पर जितनी मेरी स्टेटमेंट्स थी तो उस नंबर के हिसाब से हमने रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स को एक्सटेंड कर दिया ताकि हम मिसिंग रिस्पॉन्सेज और एरर ऑफ मार्जिन जो 95% ऑफ कॉन्फिडेंस 5% लेवल के साथ हो उसको भी रिड्यूस किया जाए, और रिजल्ट्स की एक्यूरेसी हासिल करने के लिए फिर हमने सैंपल साइज को एक्सटेंड कर दिया जिसके रेफरेंसेस सर मौजूद हैं। ठीक है, वो तो होना चाहिए। अच्छा, मैं इसको जरा 95 को बजाय 90 करके देखता हूँ। अब और काम हो गया। अच्छा, 5% को मैं करता हूँ 15%। चलो पर ठीक है, सही है, आपने यानी उससे ज्यादा ही दिया। जी सर। अच्छा, आपने ये फाइंडिंग्स में जो आपने जो इसका स्केल लाइबिलिटी चेक की थी ना, जी सर। उसमें दो जो सेक्शन थे ना उनकी अल्फा लेवल 7 से कम था। जी सर। तो उसको आपने कैसे इंटरप्रेट किया? इसको सर जो रेफरेंसेस स्मार्ट पीएलएस के हवाले से मौजूद हैं वो सर रेफरेंसेस ये कह रहे हैं कि अगर क्रोनबाक अल्फा माइनरली कम आ रही है 0.7 से, वैसे एक्सप्लेनेटरी जो रिसर्च होती है उसमें अगर 0.7 से कम आ रही है और फिर उसके लिए फिर सर हम दूसरी इंडिकेटर रिलायबिलिटी जो है वो चेक करते हैं जिसे हम कंपोजिट रिलायबिलिटी कहते हैं। तो सर जो मैंने जो है कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस लगाया उसकी जो कंपोजिट रिलायबिलिटी आ रही थी अपर बाउंड जिसे हम कहते हैं सर वो 9+ आ रहा था। तो सर रिसर्च यही कह रही होती है कि अगर क्रोनबाक अल्फा लोअर बाउंड जो है वो थोड़ा सा कम आ जाता है और आपकी फैक्टर लोडिंग्स भी 5 पॉइंट से अबव आ जाती हैं सिग्निफिकेंट लेवल से, और आप ठीक है, आगे चले थोड़ा, जहाँ हाइपोथेसिस आपने डिफाइन टेस्टिंग। जी सर। आगे इससे भी आगे। जी सर। जहाँ आपने कहा लिखा था वो एडिक्वेटली परसीव्ड है और टेबल निकालो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला टेबल। हाइपोथेसिस टेस्ट से पहले ये वाला हाई परसीव्ड है इससे वो वाला। इससे पहले वाला। हाँ ये वाला ये। जी सर। तो मीन वैल्यू थी, इससे पहले का था मीन। हाँ ये वाला। जी सर। अच्छा, ये देखें, ये मीन वैल्यू जो है 3.5, दूसरे का देखें RO2 का जी सर। 3.57। जी सर। इसको आप कह रहे हैं हाई परसीव्ड है। जी सर। ठीक है, और नीचे वाला देखिए 3.7, जी सर। मीन ज्यादा ऊपर वाले से, इसको आप कह रहे हैं एडिक्वेटली परसीव्ड है। जी सर। ये हाई क्यों नहीं है? सर ये भी हाई में ही आ जाता है। मैंने असल में यहाँ पर टर्म एडिक्वेट लिखा है आपने। जी सर, इनको सर असल में जो सिमिलरिटी यानी कि जो वर्ड्स में है उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने टर्म्स को ऊपर नीचे एडक्वाट और इस तरह से जो मेरी समझ थी उस हिसाब से लिखा हुआ है, वरना ये सारे ठीक है, वो आपने ठीक है, लेकिन जो मीन वैल्यू जो देखे ना, जो आपने मिलते जुलते हैं। जी सर। 3.82 भी हाई है, 3.5 भी हाई है, लेकिन 3.7 एडिक्वेट हो गया। यहाँ भी हाई लिख देते हैं आप। जी सर, राइट कर इसमें भी ठीक कर दीजिएगा, अगर वहाँ भी एडिक्वेट लिखा है, अगर वो हाई का रेट चल रहा है तो ये मीन वैल्यू तो हाई ही बता रहा है। जी सर। आपकी इंटरप्रिटेशन जो भी है उसके मुताबिक जी सर। एडिक्वेट तो कर नहीं, हाई हुआ फिर। जी सर। हाँ, अच्छा। अच्छा, आपने कहा था कि इसमें आउटलायर भी एग्जिस्ट करते हैं। जी सर। तो हाइपोथेसिस के रिजल्ट जब आपने इंटरप्रेट किए ना, जी सर। तो आपने उसको उसके या कंक्लूजन में भी कहा था कि वो इस वजह से भी ये क्या कहते हैं, जी सर। वो कम आए हैं।
मतलब उसकी परसेंटेज कम आई है इंफॉर्मेशन लिटरेसी और जो उसके टेस्ट है जी सर। उसका कंट्रीब्यूशन जी जो सर। है ना वो 20% है 16% है या इस तरह का जी जी सर। तो आउटलायर्स भी हो सकता है एग्जिस्ट करते हो जी सर। तो अगर आपका ख्याल क्या आउटलायर्स एग्जिस्ट करते थे आपके इस डेटा में सर इसमें सर जो स्टेटिस्टिशियंस हैं उनके अप्रोचेस जो नज़रियात हैं वो मुख्तलिफ हैं। उसमें ये है कि एक तो स्मार्ट पीएलएस जो है उसमें डेटा की नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। वेरिएंस बेस्ड जब हम अप्रोच इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो डेटा सेंसिटिव सॉफ्टवेयर नहीं है। एक तो अप्रोच ये होती है तो इसमें नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। और दूसरा ये कि सर आउटलायर्स अगर 2% से कम हो तो उनको ट्रिवियल समझा जाता है। तो मेरे जो भी डेटा था उसमें आउटलायर्स 2% से कम थे। और दूसरा ये कि सर ये जो रिजल्ट है ये सिस्टम जनरेटेड है। अब इसमें सर इनका कम आने की वजह यही है कि पाकिस्तान में जैसे मैंने लिटरेचर जितना भी एक्सप्लोर किया है अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट नॉलेज, तो उसमें ये मैंने फाइंड किया कि जो पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन लिटरेसी, हालांकि ये कॉन्सेप्ट बैरूनी दुनिया में बहुत पुराना हो चुका है, अभी तो इसके जो है ना फर्दर अपग्रेड करके इसको एआई लिटरेसी और मल्टीपल दूसरी लिटरेसीज की तरफ लेकर गए हैं। लेकिन पाकिस्तान का लिटरेचर जो मौजूद है वो ये कह रहा है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी अभी तक उस लेवल की डेवलप्ड नहीं हुई। अब जब डेवलप्ड नहीं हुई तो उस हवाले से जो मेरे रिस्पोंडेंट्स थे जिन्होंने क्वेश्चन आयर को अटेम्प्ट किया तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। इस वजह से जो है इसका इफेक्ट जो है वो पुअर टू मॉडरेट आया है। अच्छा, तो क्या आपको आउटलायर्स को एड्रेस करने के तरीके भी हैं? जी सर। तो आपने नहीं वो तरीके अप्लाई नहीं किए? उसमें सर किया था मैंने, एक तो डेटा को स्क्रीन किया था और दूसरा हॉट मेथड होता है जो सोशल साइंसेज में मोस्ट प्रेफरेबल होता है, तो उसको मैंने अप्लाई करने की कोशिश की थी। तो उससे चंद तो खैर रिमूव हो जाते हैं डेटा से, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स में हो तो अगर आप एक को निकालते हैं तो फिर दूसरे आइटम्स जो है वो सर इधर उधर हो जाते हैं। तो इस वजह से मुमकिन तौर पर जितने हो सकते थे वो मैंने किए। अगर फिर इस वजह से मैंने फिर जो लेवियंस टेस्ट था, केमो बर्टलेट्स था वो लगाया, और उसके बाद जो हमारी बेल कर्व थी उसको मैंने हिस्टोग्राम और क्योंकि प्लॉट्स के साथ एग्जामाइन किया तो उसमें कोई खास नहीं आ रही थी, तो इस वजह से फिर उसको ट्रिवियल ही कंसीडर किया क्योंकि रेफरेंसेस मौजूद थे। जी सर। अच्छा जी सर। चलो, अच्छा आपने ये बताया कि आपने स्ट्रेटिफाइड सैंपल यूज किया। जी सर। स्ट्रेटिफाइड कन्वीनियंस। जी सर। चले कन्वीनियंस तो हो गया ना, और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। जी सर। दो बंदे मिल गए वो आपने उनसे फिल करा लिया है ना। जी सर। तो स्ट्रेटिफाइड की जरा वजाहत करें। सर स्ट्रेटा मैंने 2 बनाए थे। हाँ हाँ बताएं। 2 बनाए थे, उसमें सर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। अब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ 3 बनती थी और प्राइवेट सेक्टर 10 बनती थी। तो ये जो मेथड मैंने अप्लाई किया, एक तो इस मेथड को हमने जो रिसर्च आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं उन्हीं में भी अप्लाई किया है, और दूसरा ये कि आगे आने वाली रिसर्च जो थीसिस से हम पब्लिश करने जा रहे हैं या जो चीज़ें पब्लिश करेंगे तो फर्दर स्टेटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करने हैं। तो इसी वजह से फिर हमने अपने सैंपल को यहाँ पर जो है थोड़ा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, जिसके बाकायदा रेफरेंसेस हमने थीसिस में सर प्रोवाइड किए हुए। अच्छा अभी नहीं, जो आपने 2 स्टेटा बनाए स्टेटम। जी सर। ये पब्लिक और प्राइवेट। जी सर। ठीक है ना, तो एचईसी की टॉप 14 आपने 13 को रैंक यूनिवर्सिटीज ले ली। जी सर। बिजनेस स्कूल जो थे। जी सर। तो उसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों शामिल हैं। जी सर, दोनों शामिल हैं। तो फिर स्टेटा किस तरह बना, फिर 2 अलग अलग कैसे बने? सर दोनों शामिल है। सर स्ट्रेटाफाइड 2 पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ थी, दोनों मौजूद हैं, तो इस वजह से जो है हमने उनको स्ट्रेटा कंसीडर किया। स्ट्रेटा नहीं मतलब ये देखा ना, ये स्ट्रेटिफाइड सैंपल नहीं है भाई। अच्छा। ये पर्पसेस सैंपल है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि आपने पहले से क्राइटेरिया बता के एचईसी की टॉप 13 ले ली, तो इसको पर्पसेस सैंपल कहते हैं, ठीक है ना। ताकि वो उसमें टॉप वाले बिजनेस के स्टूडेंट आ जाए तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी के हवाले से उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस और ये वो, ठीक है ना, वो अच्छे वाला अच्छे स्टूडेंट विजिटर हो गए और वो मेहनती हो गए, ठीक है ना जी। तो पर ये सर्टिफाइड ये नहीं बनता है, ये नहीं होते सर्टिफाइड, ठीक है ये टर्म यूज करके, ठीक है ना जी सर। अच्छा, अब मैं ये देख
थ्रू जो मैंने रिपोर्ट भेजी थी उसमें मैंने क्या क्या लिखा था, ये तो अभी मैंने आपकी प्रेजेंटेशन दे दी थी। जी सर। अच्छा, एक ओवरऑल एक बात थी मेरे दिल में, एक कमेंट था जी सर। कि कुछ होते हैं ना हाइपोथेसिस और कुछ असम्पशन होती हैं। जी सर। अच्छा, ये तो मेरे नजदीक असम्पशन है कि अगर कोई बंदा इंफॉर्मेशन रिलेटेड होगा तो जाहिर है उसको उसका फायदा ही होगा। जी सर। ठीक है ना, वो फायदा कहाँ एकेडमिक परफॉर्मेंस की सूरत में हो, कहाँ वो उसको उसका वो जो क्या कहते हैं कोऑपरेटिव एंगेजमेंट की सूरत में हो, है नहीं। जी सर। तो नॉलेज एक्विजिशन की वजह से इंफॉर्मेशन लिटरेसी तो हमेशा फायदा ही देती है। ये कोई नहीं कह सकता कि नुकसान होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन लिटरेट होने का नुकसान है। जी ये असम्पशन है कि ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी का फायदा होता है। जी सर। जी सर। एक तो ये है। जी सर। तो आप इसको आपने असम्पशन को एक्सरसाइज कर दिया। जी सर। हालांकि असम्पशन को तो मान लिया जाता है कि ये ठीक है, उसको तो टेस्ट नहीं किया जाता है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर एक तो जो माजी का लिटरेचर था जो पब्लिश्ड है वो मल्टीपल जो वेरिएबल्स और मल्टीपल फिनोमेना के साथ है उसको जस्टिफाई कर रहा है कि उसका रिलेशनशिप है। और सर अजम्पशन तो एक बंदे की होती है कि आपने अज्यूम कर लिया, अपने तौर पर चीज़ों को समझ लिया, अपने तौर पर चीज़ों को कंसीडर कर लिया और आपने एक अजम्पशन बना दी। लेकिन जब उस ये बात किसी जगह आपने पढ़ा है कि इंफॉर्मेशन लिटरेट होने का नुकसान होता है लोगों को? नहीं सर। हाँ, तो मेरे असम्पशन है ना, ये फायदा ही होता है। जी सर, फायदा होता है। फायदे की चीज है, ठीक है ना। तो इन जो चीजें पहले से यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है उनको तो फिर टेस्ट नहीं किया जाता ना। मैं ये कह रहा था आपने ये एम्पिरिकल टेस्टिंग की है, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि असम्पशन को आपने लिया, उसको असम्पशन को हाइपोथेसाइज करके एम्पिरिकल टेस्ट कर दिया? जी सर। मेरे आपने मेरे जेब में जवाब है, आपने बताया भी है, लेकिन अब आप नहीं उसमें सर ये था कि उसमें ये था जी सर, उसमें सर ये था कि जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में स्टडीज हैं वो तो हैं अपने तौर पर ना, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि रिसर्च गैप है, एक अजम्पशन थी, उस अजम्पशन को फर्दर लिटरेचर बेस्ड हमने बनाया, फिर लिटरेचर बेस्ड के ये जवाब नहीं है। ठीक। अच्छा, पर जवाब इसका वो आपने जो आपकी रिसर्च बताती है ना कि इसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसका इफेक्ट कितना है। जी सर। ठीक है ना जी। और हमारे इस बिजनेस स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसका इफेक्ट कितना है, वो पुअर टू मॉडरेट आया है, उसकी कुछ वजूहात भी आपने बताई। ठीक है ना जी। तो ये इसका ये फायदा हुआ कि है तो ये फायदे की चीज, लेकिन इफेक्ट साइज जो है वो पुअर आया है। तो इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है कि ये जो पुअरनेस है इसको खत्म किया जाए। तो इसका जो फायदा है ना वो ये 25% से बढ़कर ये ऊपर 50 से ऊपर जाना चाहिए, हाई लेवल का होना चाहिए, 100% तक जाना चाहिए। ये इस एम्पिरिकल रिसर्च का ये फायदा हुआ है कि आपने एक असम्पशन को हाइपोथेसाइज करके टेस्ट करके ये फाइंडिंग आपकी असल में कंट्रीब्यूशन देती है कि इसका जो है ना इस पर मजीद काम करने की जरूरत है, इसको उसका कोर्स का हिस्सा बनाना चाहिए। आपकी जो रेकमेंडेशन है जिसको लोगों को इंफॉर्मेशन, और दूसरा आपने ये भी बताया कि लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं, डन प्रूवर की बात की आपने। जी सर। वो भी देखा जाए कि वो क्यों करते हैं ऐसा। ठीक है ना जी सर। हाँ, तो ये चीजें जो है ना ये असल आपकी असल जो रिसर्च का आउटपुट है ना वो ये है, ना कि वो जो आप कह रहे हैं कि नहीं ये गैप था रिसर्च का और ये था नहीं हुआ था, नहीं वो नहीं, ये जस्टिफिकेशन बनती है। समझ गए ना? जी सर। अच्छा, ये बताएं कि आपने फिर जो यूनिवर्सिटी की हर यूनिवर्सिटी की पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शनली किया था सैंपल को? जी सर। उसको 50-50 हर यूनिवर्सिटी से लेना। जी सर। कहीं पर 1,000 है वहां से भी 50 ले लिया, कहीं पर 10,000 है वहां से भी 50 ले लिया, ये तो जस्टिफाई नहीं है ना। तो प्रोपोर्शन करना चाहिए ना पॉपुलेशन के हिसाब से। क्या ख्याल है? बड़ा आसान सा फॉर्मूला है उसका सर। जी टोटल मतलब 20,000 है और उसमें से किसी एक
का 500 है तो उस तनासब में 20,500 के तनासब में सैंपल साइज क्या बनता है, ये प्रोपोर्शनेट कहलाता है। मैंने ये करने के लिए ना हमने जी, इक्वल जी, साइज प्रोपोर्शन लिया, इक्वल साइज इक्वल साइज अच्छा, ये आपने लिखा था पेज 79 पर कि आपने ये स्टूडेंट्स इसलिए सेलेक्ट किए बिकॉज दे आर मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन, इंडिपेंडेंट, सेल्फ डायरेक्टेड। जी डेफिनेटली कैसे पता था आपको? सर, एक तो इसमें कुछ साइटेशंस आपने तजवीज़ की थी, तो वो जो डायरेक्टेड साइटेशंस थी, एक तो वो भी मैंने ऐड कर दी, और दूसरा ये कि मेरी जितनी जो अपनी रिसर्च है इस वक्त जो थीसिस में से भी पब्लिश्ड है, तो उसको भी इसी तरह से जो पब्लिश्ड रिसर्च है उसमें फिर मल्टीपल साइटेशंस प्रोवाइडेड हैं, उसमें प्रोवाइड कर आपने इस जो आपने क्लेम किया इसको आपने फिर लिटरेचर से सपोर्ट फराहम जी बिल्कुल सर। जी, आपने कहा था कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, तो जो भी आपने जिस अज्यूम कर लेंगे खुद से ही जी जी तो ये स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं इसलिए मैंने लिए, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देंगे तो फिर तो कोई क्लेम तो नहीं ना माना जाएगा। जी सर, उनको मैंने साइड कर दिया था, जस्टिफाई कर दिया था। ठीक है, रनिंग ऑर्डर है should develop an appropriate system to raise time to time as training। ये इस पर भी मैंने लिखा था कि आपने ये भी अज्यूम कर लिया कि उनको ट्रेनिंग वो नहीं करा रहे लाइब्रेरियन, तो उनको करानी चाहिए ट्रेनिंग। जी सर। इसका क्या किया आपने? सर, इसको जो है ना, एक तो पूरे के पूरे जो रिकमेंडेशंस आपने दी थी सर उनको रिवाइज किया, और दूसरा ये कि ये जो चीज़ है सर, कुछ चीज़ें रिकमेंडेशंस में एडिशनल भी हैं लिटरेचर बेस्ड। अब सर लिटरेचर क्योंकि जो भी माजी का मुझे लिटरेचर ये बताता है कि लाइब्रेरियन ये ट्रेनिंग फराहम नहीं कर रहे हैं सर, बड़े हद तक प्रोविजन इवन डॉक्टर कमल अमीन साहिबा और मिदरारुल्लाह साहब की स्टडी है, वो तो बाकायदा इस लेवल पर कह रही है कि पाकिस्तान में बिजनेस इंस्टीट्यूशंस या किसी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इंफॉर्मेशन लिटरेसी का प्रोविजन बुनियाद से ही नहीं है। इसी तरह से फिर अपनी भट्टी ये जवाब चाहिए था कि लिटरेचर सपोर्ट करता है आपको इस चीज़ को, आपने एक रेफरेंस भी सपोर्ट कर दिया जी सर, डॉक्टर कमल अमीन का, तो उनकी ये लिटरेचर ये देता है फाइंडिंग्स के लाइब्रेरियन ये काम नहीं कर रहे, जी आपकी बड़ी ये रिकमेंडेशन बनी है। लेकिन ये रिकमेंडेशन जो है वो लाइब्रेरियन को ये करना चाहिए, लाइब्रेरियन नहीं कर रहे, ये किस फाइंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपने बताया सर? कौन सी है सर, ये असल में एडिशनल कुछ रिकमेंडेशंस हैं क्योंकि स्टडी पीएचडी की है और इसमें कुछ लिटरेचर भी ऐड है, तो वो जो लिटरेचर ऐड है उसमें ये गैप बताया गया है, तो उस वजह से फिर इसको रिकमेंडेशन में रिकमेंड किया गया है। तो आप उसमें लिखे ना भी ये मेरी फाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन लिटरेचर मेरा लिटरेचर सजेस्ट कर रहा है जी सर कि ये चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है इसी वजह से ये वाला जो पुअर टू एडिक्वेट क्या कहते हैं वो मॉडरेट के इफेक्ट साइज आए हैं, ये उसकी भी ये भी एक वजह हो सकती है। आप उसको रिलेट करें ना फिर लिटरेचर से। जी सर, आप वो अपने फाइंडिंग से रिलेट ना करें। जी सर, उसको फिर हमने जो भी मैं समझ पाया डिस्कशन वगैरह में चीजें लिखनी चाहिए, डिस्कशन है ना की हुई है ना। जी जी सर, जी जी सर। चलिए, बहरहाल आपका थीसिस अच्छा था, थैंक यू सर। और मेरा स्टूडेंट जो है इसलिए कोई मैंने बहुत ज़्यादा मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं थी, बिल्कुल थैंक यू सर, आसान सी थी। थैंक यू है सर, ना? थैंक यू और आपको पता ही होगा। थैंक यू सर, तो इसलिए मैंने और जल्दी भी उसको मैंने कर लिया था, evaluate भी कर थैंक लिया यू था। सर, थैंक यू और सर। स्मार्ट पीएलएस जो है ना, वो आपने मेथड यूज किया, इसकी मैंने तारीफ सुनी है, मैंने तो यूज नहीं किया। मेरा एक स्टूडेंट है पीएचडी का, वो भी ये यूज कर रहा है, ठीक, वो भी ये चाहता है तो वो ये यूज करेगा, कहते हैं ये बड़ा अच्छा और बड़ा फ्लेक्सिबल। सेकंड जनरेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सर इसको कंसीडर किया जाता है। हाँ, जी सर, जी सर, चलो बस मेरी तरफ से इतना ही, अगर किसी और ने कोई सवाल पूछना तो पूछ लें। थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। हाउस में से किसी में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। शाहजाद, मैनी कांग्रेचुलेशंस एंड आपने बहुत अच्छी तरह से डिटेल रिजल्ट नहीं बताया, मुझसे पूछेंगे उसके बाद मुबारक दीजिएगा। ओके सर, ओके। बहरहाल नहीं हो सर, इसने बड़ी डिटेल के साथ तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है और आई थिंक सो अब कोई मज़ीद क्वेश्चन बनता नहीं है, बस यही कहना है। थैंक यू सो मच।
शाहजेब मैं आपका सुपरवाइजर भी हूँ, आपके काम को मैंने देखा भी है, करवाया भी है। मेरा एक आपसे सवाल है कि आपने कहा कि पॉल ज़रकास्की जो है उसने इस टर्म को कॉइन किया इन 1974, तो क्या 1974 से पहले इंफॉर्मेशन लिटरेसी एग्जिस्ट नहीं करती थी? सर, व्हाट डू यू थिंक? सर दूसरी लिटरेसीज तो यकीनन एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इंफॉर्मेशन लिटरेसी बियॉन्ड द राइटिंग एंड रीडिंग, तो उस हवाले से जो है इस पे आपके इस आंसर पे मैं बीइंग योर सुपरवाइजर एंड नाउ द बीइंग द पार्टिसिपेंट्स ऑफ योर डिफेंस, मैं ये कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस वक्त उससे पहले बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शंस एग्जिस्ट करती थी, लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शंस एग्जिस्ट करती थी, यूज़र एजुकेशन के नाम से ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता था। तो ये टर्म्स दीज आर परहैप्स एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन इज। तो जब से इंफॉर्मेशन का काम है तब से ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसने क्या किया कि इन सारे फिनोमेना जो एग्जिस्ट करते थे इनको एक नाम दिया। तो इसको यूं कह देना कि ये 1974 से एग्जिस्ट करता है। अच्छा, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में भी मैं हाउस के लिए बताना चाहूँगा कि 1974 में पॉल ज़रकास्की इसको टर्म कॉइन करता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। अब आप ज़रा सोचिए कि उस वक्त इंटरनेट सिरे से है ही नहीं, और हमारे यहाँ हमारे एक उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मुमताज़ अली अनवर साहब 1979 में वो प्रपोज करते हैं सिलेबस एजुकेशन ऑफ द यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन। वो आर्टिकल अमर पब्लिकेशंस ने पहले लिखा है, फिर वो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी रिव्यू में 1981 में वो पेपर छपा है। सो ये मैं सर की आपकी सर बात से ये रिफ्यूट करना मेरा मकसद है कि आपने कहा कि लाइब्रेरी साइंस में या हमारे कॉन्टेक्स्ट में 2005-06 से बात आई है पाकिस्तान में। मैं उसकी तस्हीह के लिए कहूँगा कि ये मुमताज़ अली अनवर साहब इसका सिलेबस बता चुके हैं कि ये सिलेबस है, ये इसको टीच किया जाना चाहिए इस कोर्स को। 1979 की बात कर रहा हूँ, और अगर आप इसको थोड़ा और देखें कि 1-1.5 साल पहले जारी बात उन्होंने रिसर्च की थी PCSIR के साइंटिस्ट की और कॉलेज टीचर्स की, जिसकी नतीजे में उन्होंने सर ये प्रपोज किया। सो आई कैन शेयर दैट एविडेंस। तो एक अच्छी बात। हाँ, थैंक यू सर। अच्छा, डॉक्टर मुमताज अली अनवर ने टर्म भी यही यूज की थी इंफॉर्मेशन लिटरेसी की? नहीं सर, यूजर एजुकेशन ऑफ द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर की एजुकेशन, यूजर एजुकेशन, यूजर ओरिएंटेशन। जी थैंक यू। ठीक है। ये भारतीय चीजें तो बहुत जी पुरानी जी हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू। ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं प्लीज। नहीं, मैं भी जरा इनकी जवाब दे दूं ना बात का। अच्छा, वो ये चीजें यूजर एजुकेशन की तो सदियों पुरानी है, बहुत जब से लाइब्रेरी साइंस शुरू हुई है तब से यूजर एजुकेशन पे चल ही रहा है ना। मैं बात कर रहा था टर्म की, इंफॉर्मेशन लिटरेसी की टर्म कब आई है, मैं ये बात कर रहा था। 2009 में सर, पाकिस्तान में 2009 में। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो है ना, ये इस पर ALA ने किताब लिखी सबसे पहले, ACRL ने ये टर्म जो है इसको यूज किया, इसकी डेफिनेशन दी। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। अगर तो ये एक कॉन्सेप्ट है क्या, इसका मतलब क्या है, तो फिर तो ये टर्म भी यूज करने की जरूरत नहीं थी, यूजर एजुकेशन की आप यूज कर लेते हैं, नई टर्म यूज ही सर इस पे भी डिबेट है, इंफॉर्मेशन फ्लुएंसी, इंफॉर्मेशन कॉम्पिटेंसीज, इंफॉर्मेशन स्किल्स, इंफॉर्मेशन एजुकेशन, ये दीज आर द अल्टरनेटिव टर्म्स। डॉक्टर साहब ये सर एक्सक्यूज मी, टर्म तो बहुत सारे बन सकती हैं, ठीक है ना। आप किसी थेसारस में दें कि इसका क्या सिनोनिम है, तो वो आपको दर्जनों मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो हम जब पढ़ते थे, आपको याद होगा 90s में 80s में ये सब्जेक्ट कोर्स होता ही नहीं था, इस टर्म का नहीं होता था, यूजर एजुकेशन के होते थे। रेफरेंस सर्विसेज के अंदर यूजर एजुकेशन पढ़ाते थे, पढ़ते भी थे। लेकिन ये टर्म जो है ना, ये इस सदी में आई है, तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि ये टर्म जो आप यूज कर रहे हैं कि ये 1974 में ये IL की स्टडी हुई है, तो फिर इसको IL ना कहे, वही टर्म यूज करें जो उस वक्त होती थी, ठीक है ना। ये आप कह दें कि इसी बैकग्राउंड में जी ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। इसी तनाजुर में या इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो मीनिंग है, वो टर्म में और होती थी, और ये स्टडी 1974 में हुई थी, ये कहें। अगर आप कहें कि ये एक सदी साल पुरानी टर्म है, तो इस तरह तो नहीं है। ये एक साल यानी वो उस जमाने में ये टर्म नहीं होती थी। मकसद यही होगा, इसके बैकग्राउंड में जो मकसद है, लेकिन टर्म ये
ये इसी सदी की है। मैं जी इस तरह- जी, बेहतर हो गया सर, बेहतर हो गया। ओके जी, एनी क्वेश्चन? सर मैं क्वेश्चन फिर बाद में पूछूंगा। बाद में चलिए। तो ऐसा है कि आपने दावत देता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर शमशाद अहमद साहब को। डॉक्टर साहब चेयर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के, और जाहिर है वही यहाँ पे आके इस वाइवा को कंक्लूड करवाएंगे और सर फिर अनाउंस करेंगे व्हाटएवर द रिजल्ट ऑफ दिस वाइवा इज। सर प्लीज डॉक्टर साहब, तो आप पहले रिजल्ट ले लें डॉक्टर साहब से, जो है ना। ओके, हाँ, फिर आपकी इजाज़त से सर प्लीज़ आप अगर यू आर डन विद योर क्वेश्चंस तो प्लीज़। हाँ जी, हाँ जी, तो क्वेश्चन तो मैंने पूरे कर लिए थे। वो चूंकि उन्होंने वो बात छेड़ी तो मैंने कहा चले मैं भी पार्टिसिपेट कर लें। जी जी सर। हाँ जी जी, मेरी जिस तरह मैंने थीसिस की रिपोर्ट दी थी वो भी पॉजिटिव थी, और आज का डिफेंस जो है इन्होंने इसको सक्सेसफुली इसको डिफेंड किया है। सवालों के जवाब भी इन्होंने सेटिस्फैक्टरी दिए हैं। तो मेरी तरफ से ये जो है ये कामयाब है, पास है, और कांग्रेचुलेशन सबको मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर चेयर प्लीज़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected colleagues, respected Professor Dr. Parvez Ahmed साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शाहज़ेब मुगीरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने ये अपना सफ़र जो है ना काफ़ी मेरे ख्याल 7 साल पहले शुरू किया था। पहले एमफिल किया इन्होंने यहीं से, ये सिंध से आए हैं, बड़ा इन्होंने ट्रैवल किया और फिर वहाँ से इस कल्चर में आके रहना और यहाँ पे सारा फिर काफ़ी सारी मुश्किलात इन्होंने फेस की। और एक बहुत बड़ा इनके साथ जो इनकी अटैचमेंट थी डॉक्टर हारून अदरीस साहब के साथ, तो ये उनके साथ काफ़ी अटैच थे। वो इनकी शादी पे भी गए थे, तो वो साथ छोड़ गए, तो वो काफ़ी इनके साथ ये उससे बड़े अपसेट भी हुए। तो लेकिन ये कि भी दुनिया में जो आया है उसने जाना भी है, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। तो फिर इसको हमारी फैकल्टी ने, ख़ासकर डॉक्टर आसिफ नवीस साहब ने, गुलाम मुर्तज़ा रफ़ीक साहब ने बड़ा हौसला दिया, और फिर इन्होंने इसकी सुपरविजन ली, और अपनी सुपरविजन में इन्होंने इनका जो बैच था इसमें ये 2020 वाला बैच था शायद, तो इसमें सबसे पहले ये स्कॉलर हैं जिन्होंने कंप्लीट किया। तो इनकी बड़ी सक्सेस है डिस्पाइट ऑफ मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स। तो इन्होंने सक्सेसफुली इसको डिफेंड भी किया, और माशाल्लाह इनका मैं काम देख रहा था इनके डिफेंस में। इन्होंने जो ख़ासकर एनालिसिस में काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने जो बताई हैं, इनको हर चीज़ का अंदाज़ा था। तो बाकी जो सर आपने जो APA के हवाले से बात की है, मैं इन्हें इंश्योर करवाऊँगा ये जो है ना 7th एडिशन के, क्योंकि ये चेंजेस आती रहती हैं। कभी वो जो है ना जस्टिफाइड हो जाता है, कभी अनजस्टिफाइड हो जाता है, कभी एट ऑल हो जाता है, कभी हेडिंग्स 5 हो जाती हैं, कभी कुछ इस तरह का। ये जो सारी चीज़ें हैं मैं इनको ना 7th एडिशन के मुताबिक मैं डॉक्टर आसिफ नवीस साहब और डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा रफ़ीक साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनको ना रिव्यू कर लीजिएगा और अकॉर्डिंग टू द APA। अगर ऑलरेडी हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो इनको कर लीजिएगा। तो मेरी तरफ से सर आपका बहुत शुक्रिया, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की तरफ से बहुत शुक्रिया। आपको जब भी जहमत दी, आपसे रिक्वेस्ट की, आपने जो है ना आपका हमेशा वेलकमिंग एटीट्यूड रहा, और आपने हमारी हेल्प की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, और क्वालिटी जो है इनपुट दिया, तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और आप पार्टिसिपेंट का सबका बहुत शुक्रिया, IT जो है ना कोलीग्स, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, HEC का बहुत शुक्रिया। तो ये सब एक कोऑर्डिनेशन से सारा ये काम होता है, सब मिलजुल के काम करते हैं। कहीं से भी कोई भी चीज़ रह जाए तो फिर उसमें ज़ाहिर है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो हर बंदा अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है। जैसे शुरू में वो जो है ना प्रॉब्लम आया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है ना कंटिन्यूस, कोई विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी इंटरप्शन, सारे का सारा ये मामला चला। तो मैं महमूद साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, हमेशा ये हमारे साथ रहे सारे ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने में, हमारे उसको जो है वाइवा में, तो ये हमारे साथ होते हैं। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू।
और डॉक्टर आसिफ अली साहब और डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा रफ़ीक साहब को भी बहुत बहुत मुबारक हो। और एक और चीज़ मैं जो शेयर करना चाह रहा था, हमारे ऑलमोस्ट अब डजन जो है ना 12 PhD हो गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से, तो इंशाल्लाह और भी हमारे सबमिटेड हैं थीसिस, वो भी आ जाएंगे। तो डॉक्टर आसिफ अली साहब या गुलाम मुर्तज़ा रफ़ीक साहब अगर कुछ कहना चाहें मैम से। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था, ये HEC अब शेड्यूल करती है ये ऑनलाइन? ये सर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो उन्होंने HEC की उन्होंने जो उसमें कोई ना कोई प्रोविजन है तो वो खुद से कंडक्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह HEC के सारी रूल्स को फॉलो करती है, तो जो भी उनकी वो जो इंस्ट्रक्शन होती है इसका एक फायदा ये भी है कि HEC के पास भी इसकी रिकॉर्डिंग जी वो फिर जो आगे जो है ना वेरिफिकेशन में या इन मामलात में, तो हम शुरू से उनको फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये कंपल्शन है अच्छा सिस्टम है ये। हाँ जी, यूनिवर्सिटी में नहीं होती। कुछ यूनिवर्सिटीज करती हैं, शायद आपकी यूनिवर्सिटी में भी नहीं है शायद। हम MS टीम यूज करते हैं, वो भी HEC का दिया हुआ था। हाँ ऐसे ही है सर। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच अगेन। ओके ठीक है, ओके थैंक यू। Thank you. मेरी तरफ से एक दफा फिर सबको मुबारक। जी ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।